Hello friends, welcome to Birens Academy. I am Pramila. Today we will going to discuss about epic theatre, and it is a very difficult concept, but I will make it very clear and simple to you that you can able to understand the concept in a easy way. So Irving Piscator coined the term epic theatre. The person who created or who coined the term is Irving Piscator. Understood? He was Irving Piscator. And epic theatre was primarily proposed by Bertolt Brecht in Germany. Okay. No doubt the epic theatre, the term coined by Irving Piscator, excuse me, but it is primarily proposed by Bertolt Brecht in Germany. Okay. देख एरविन पिस्काटर होचंदी पर्सन जे कि एपिक थिएटर टा कॉइन करथले टर्म्स टा बट बहुत फ्लोरिस्ट हेतिला आउ एपिक थिएटर टा आउ कहा कहा द्वारा हेतिला एडा होची ब्रिटल ब्रेच तांको द्वारा ही जर्मनी रे एपिक थिएटर रो फ्लोरिस्ट हेतिला राइटिंग्स गुडा को क्रिएट हेतिला अंडरस्टूड Brecht suggested that a play should not cause the spectator to identify emotionally with characters or action before them, but should instead provoke rational self-reflection and critical view of the action on the stage. So, according to Brecht, he suggested that a play should not cause the spectator to identify emotionally. Okay, to whom? With the character or his action, but they should instead provoke the rational self reflection and critical view of the action on the stage. Understood? ब्रेथ कौन सजेस्ट करचंदी जे ए प्ले रे जो प्ले माने एपिक थिएटर रे जो प्लेटा चली थिबो सेथिरे स्पेक्टेटर कौन करिवे इमोशनली अटैच्ड हेबेनी अंडरस्टूड कैरेक्टर सहित बट से माने कौन करिवे तारो जो डाउनफॉल होची बा तारो जो प्रॉब्लम्स होची ताको से माने कौन करिवे गोटे रेशनल सेल्फ रिफ्लेक्टिव वे रे देखिबे बा क्रिटिकल व्यू रे देखिबे जो थी कि से माने तांके व्यू पॉइंट दे परिवे माने सोसाइटी आफ्टर सेटा देखि के आसला परे तांको द्वारा किछि सोसाइटी रे चेंजेस हे परिवो अंडरस्टूड ब्रेथ करो ओपिनियन रे बुझि परलो जेमति कि we have already discussed about Aristotle theory. Okay, Aristotle definition of tragedy and how he has given the mimesis, hamartia, catharsis, everything. And according to Aristotle, the theory that the play should impact the the audience. Understood? Aristotle को view रे कौन थिला जत्ते बेले गोटे प्ले गोटे ऑडियंस देखुची से प्ले को फिल करिवो बा से कैरेक्टर जहाँ फिल करछे सेटा फिल करिवो जोटा कि पूर्वर मु पढ़ाई छी अंडरस्टूड बट एटा कोन अछि ब्रेथ एठी कोन कहउचंती जे सी इमोशनली किछि कनेक्ट हबनी कैरेक्टर सहित ऑडियंस बट ता बैकग्राउंड सी कोन फील करिवो जे तारो सेल्फ रिफ्लेक्शन अंडरस्टूड माने तारो गोटे क्रिटिकल व्यू पॉइंट सेटा से क्रिएट करियो जोटा कि आउटसाइड सोसाइटी को आसिले सी किछि चेंजेस करि परिवो सोसाइटी रे I hope you understood it. Next, move on. Epic theatre was a theatrical movement of early to mid 20th century. The members associated with it are see, it has flourished. This movement started in early to mid 20th century. Understood? And here, these four persons are the very important person associated with epic theatre. You have to remember all these names. These are very important. You will get the questions in the examination that who are associated with the epic theatre, or they will give the name of a particular member and they will ask you about. They will give the four options that who is associated with this theatre. Understood? Or this person is associated with which theatre. Understood? So this kind of questions you will get. That's why you have to remember all the names. बुझीपार जे तुमको सबू नेम को मन रखा पड़ो अंडरस्टूड दैट इज इरविन पिस्काटर दैट हु हैज कॉइन्ड दिस टर्म एपिक थिएटर एंड दैट इज व्लादिमीर मायकोवस्की एंड Evaloud
Meyerhold, okay, Evoder, Meyerhold, and Bertolt Brecht. Okay, bit difficult names are there, but you have to remember it. Understood? These are the four persons who are associated with epic theatre. Next, Brecht preferred the dialectic theatre rather than epic theatre. Okay, so you can say that epic theatre is also known as dialectical theatre also. Remember this one also, that epic theatre is also known as dialectical theatre, and this theatre is basically associated with political drama. Understood? The theme should be the political drama. Understood? Next, the most important techniques Brecht developed to perform epic theatre is, these are the three terms you have to remember it. I have highlighted in a different colors. Okay, first one is Verferdung effect. This is a German word, that means alienation effect. Okay, Verferdung effect means alienation effect or estrangement effect. Okay, estrangement effect. These are the terms associated with epic theatre. He used various means to achieve this technique. Understood? देखो सी बहुत गुड़े टेक्निक्स यूज करथिले जे तांगर जहाँ जहाँ सी चाहूले जे सोसाइटी रे सेठू किछि गुड़े शिक्षा नहीं कि से सोसाइटी रे यूज करि परिबे ऑडियंस बुझिपारल तो सेथिपे से डिफरेंट टेक्निक्स यूज करथिले सेथिरे चारटा टेक्निक्स व्यवहार हेतला. अंडरस्टूड? से टेक्निक्स कोन? फ्लडिंग द थिएटर विथ ब्राइट लाइट. ओके, देखो थिएटर नॉर्मली केमिति थाए थिएटर रे से टाइम रे थिएटर आम जमी देखीजे थिएटर एमती थाउची. अंडरस्टूड? तो एठी कौन हो थिएटर ये स्टेज से माने परफॉर्म करेंगे ये एमती लाइटिंग दिहब गोटे ब्राइट लाइट. अंडरस्टूड? ब्राइट लाइट एमती दिहब जे से थिएटरटा पूरा लाइटिंग से जीव. बुझिपार? जो लाइटिंग रे ऑडियंस निजे फील करि परिबे जे से माने ऑडियंस. बुझिल? ना कि से माने सेठो कोन आमेरे जेमती अरिस्टोटल थ्योरी रे से माने कोन निजे ही गोटे कैरेक्टर बोली कि फील करथले. जेतेबेले गोटे ड्रामा देखुले से माने निजको गोटे से कैरेक्टर बोली कि फील करथले. बट एठी कोन होची एपिक थिएटर रे से माने फील करि पारे ए लाइटिंग्स द्वारा, जो थरे कि ए जो लाइटिंग्स पूरा रूम पूरा थिएटरटा लाइटिंग हेतिबो जो थरे से माने निजको ऑडियंस बोली फील करिवे ना कि से कैरेक्टर बोली. अंडरस्टूड? एंड हैविंग कैरेक्टर्स प्लेस मल्टीपल कैरेक्टर. ओके, one character will play multiple characters. Then next, having characters rearrange the set and full of audience. Okay, so he will rearrange the set with the full of audience. Understood? Then breaking the four wall, and it is a very important terms in epic theatre. So what is the meaning of breaking the four walls? जेमती कि आमे देखिले गोटे थिएटर रे कोन होची एमती कवर होची तीनटा एरिया कवर होगी थाउची. बुझिपारल? एटा कोन होची एंट्री पे आ एटा भी गोटे वॉल तांको पे कोन एटा होची फोर वॉल. अंडरस्टूड? सो एठी कोन होची ए जो फोर वॉल रे ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल माने से माने निजको ए स्टेज पर परफॉर्म कला बेलू किछि किछि ऑडियंस सहित से माने कनेक्ट होतुवे. बुझिपारल? जमती कि फॉर एग्जांपल देखो सिंगर माने गीत गाउते स्टेज उपरे से माने माइक को ऑडियंस पटे नेबे जे ऑडियंस किछि से गीतटा को गाइबे बोली. बुझिपारल? सेमिति किछि किछि इन्फ्लुएंस थिबो जेमती कि से माने तळको उली के आस्थुवे कैरेक्टर्स बा ऑडियंस को इन्वॉल्व करौथुबे. बुझिपारल? ताको हमें कहबा ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल. ओके, दैट बाय स्पीकिंग टू द ऑडियंस. अंडरस्टूड? So these are the important points of epic theatre. Okay, apart from that I will highlight some of the important writings of Bertolt. Okay, that is Brecht, some of the important writings. Note it down. Brecht, some of the important writings, that is Mother Courage, Mother Courage and her children.
is published on 1939. Okay, this is the example of epic theatre. Then the life of Galileo. Okay, the life of Galileo. This is also written by Brecht only. Understood? Then a short organum, organum. Okay, short organum for theatre. This is also written by Brecht. Okay, these are the important writings of Brecht. So I hope you understood this concept. That is the epic theatre and how they are how the audience would influenced, and Erwin Piscator is coined the term epic theatre, and Berthold it flourished the term epic theatre, and he suggested there are writers. Okay, 4 writers are there, and it is also known as the dialectical theatre, and it's the epic theatre is developed and performed. There is a important techniques, that is the techniques are called techniques को कौन कुआ जाउतला बेरफडम इफेक्ट बाय एलाइनेशन इफेक्ट बाय एस्ट्रेंजमेंट इफेक्ट बोली कुआ जाउतला आधारे एथरे कोन से टेक्निक्स के अचीव करिया पे तांगर किछि किछि क्राइटेरिया रहउतला, जेमति कि एपिक थिएटर ब्राइट लाइट्स रहिबो, मल्टीपल कैरेक्टर्स, गोटे कैरेक्टर मल्टीपल कैरेक्टर रोल करिवे, आउ रीअरेंजमेंट होतो फुल ऑडियंस रो, पुणी ब्रेकिंग ऑफ 4 वॉल थिबो सेथिरे. अंडरस्टूड? ए सब होची concept of epic theatre. I hope you understood the concept of epic theatre. If you have any kind of doubt, you can ask me or message me also. And thank you for the class.